And even as fear and anxiety grips the valley area, it seems like the Hindus have begun to leave Kashmir after a slew of targeted killings. In fact, we have a testimony of one such government employee under the Prime Minister's package, who is also a Kashmiri Hindu, stating that the situation is getting worse. 4 killings took place today and about 30 to 40 families have already left the city. Our demand was not fulfilled. Their safer places are within the city only. No safe places are available in Srinagar, they say. So many of those protests that have been taking place. Let me go across to Akansha and Sohail, both joining us live this morning. Akansha, we know that the LG is in Delhi. There, the Union Home Minister will be chairing an all-important meeting, but there is a lot of pressure building up with the Kashmiri Hindus now moving elsewhere. As they say, they are forced to leave the valley again. Well, as far as Delhi is concerned, Union Home Minister Amit Shah is going to hold a crucial high-level meeting today to review the security situation in Jammu and Kashmir. As you rightly pointed out, the Lieutenant Governor is currently in Delhi. He, along with the National Security Advisor and various officials from the Union Territory, will be part of this meeting. Now, this comes in the wake of targeted killing of Hindu government employees in Kashmir by the terrorists, and also as the Jammu and Kashmir administration prepares for the Amarnath Yatra, which is going to start in few days. Well, yesterday 2 killings in Kashmir, one of a bank employee hailing from Rajasthan in Jammu and Kashmir, Kulgam area, and the second of a migrant laborer hailing from Bihar in Budgam area of Jammu and Kashmir. And just 2 days before that, a teacher hailing from Jammu and Kashmir, Samba district, was also gunned down by the terrorists in the Kulgam area of Jammu and Kashmir. Now, there's been spate of killings going on in Jammu and Kashmir, and there's also fear in 2020, at least, 2022, at least 20 people have been gunned down by terrorists in Jammu and Kashmir. This also comes at the time when Kashmiri Pandit community is actually protesting in Jammu and Kashmir, seeking them to be located to a safer place and a security cover to be provided to them. So yesterday, Union Home Minister Amit Shah also held a meeting with the National Security Advisor to review the situation. Today's meeting also holds importance because the LG of Jammu Kashmir is also here, and it'll have to be seen what outcome comes out of this. All right, stay with us, Akansha and Sohail, even as we have spoken to several of these Kashmiri Hindus who now fear for their lives, for themselves as well as their family members, because they say that even as security personnel are not safe here, how can civilians, in fact, make themselves safe? We'll play out some reactions first. तो हमारे साथ काफी लोग सुबह से तो बहुत लोग निकल चुके थे, तो हम थोड़ा लेट हो गए. तो मेरे साथ ही कम से कम अभी 15 फैमिलीज थी. तो वो भी आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं वो लोग अभी, और सुबह से भी कम 30-40 फैमिलीज आ चुकी है. सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट हो रही है. आपने देखा सुबह से ही आज 4 किलिंग्स हो चुकी है. तो अभी हमारी बहन 3-4 दिन पहले मरी उस स्कूल प्रीमिसेस में. उससे पहले राहुल भाई मारे गए अपने ही ऑफिस के अंदर. तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है कश्मीर में. सर, हमने एक ही डिमांड की थी. हम डेलीगेशन में भी गए थे एलजी साहब से मिलने के लिए. हमने एक ही डिमांड रखी थी कि हमें बचाइए. हालात तो ऐसे ही आप जैसे आप देख पा रहे हो, हालात बिल्कुल फेवरेबल नहीं है. माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग आप देख रहे हो क्या हालात अभी चल रहे हैं. अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे हालात हैं. बस अभी पहुंचे हैं, वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं. हम भी रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं. हमारे लिए तो अभी सेफर प्लेस आउटसाइड कश्मीर ही है, वो जम्मू है. अब आगे देखते हैं क्या डिमांड्स क्या है आप. सर, डिमांड हमारी एक है, रिलोकेशन, बस और कुछ नहीं. हमें फिलहाल अब 2-3 साल के लिए यहाँ पे रिलोकेट के कर दें. इवन कि उनके पास गन्स भी है, एम्यूनिशन भी है, तो एक सिविलियन बंदा कैसे अपनी सिक्योरिटी कर पाएगा. Sohail is with us for more details, because Sohail, it seems that every mode of transportation is being used by the Kashmiri Hindus to leave the valley, whether it be it at the airports. It is being said that it is crowded. Even by road, the people are leaving. In fact, yesterday we have seen those back-to-back incidents of target killings. While in first case, we have seen the Ilakai Dehati Bank branch manager was shot dead in South Kashmir's Kulgam district. Then another incident late in the evening, wherein 2 non-local laborers
targeted. Now, these incidents have again created an atmosphere of fear for these Kashmiri Pandits and Hindus, in fact, living here or working here in Kashmir Valley. We have seen number of families have moved out. They have, in fact, they are moving towards the Jammu. In fact, those people who were living here on rented accommodations, they have left, and now those Kashmiri Pandits who have been allotted accommodations are living in fact, those employees colonies in South Kashmir or North Kashmir or in Srinagar. They are settled here, and administration has been assuring them that they will be provided safe and secure atmosphere here. They will be given safety and security will be provided to them. They will be in fact transferred, and that process has already started. By June 6th, the officials have been directed to ensure that all Kashmiri Pandits, including Kashmiri Hindus and all those belonging to minorities, are placed at safer locations in Kashmir division, in fact placed at district headquarters. But these Kashmiri Pandits have been demanding from day one since Rahul Bhatt's killing that they be relocated, they be transferred to Jammu division. However, as of now, the administration is not agreeing or accepting this particular demand. We'll have to wait and see what comes out of the meeting that's going to take place today in New Delhi, where Home Minister Amit Shah will be chairing that meeting. So what kind of decision the central government and the Jammu and Kashmir administration will take, because we have seen certainly that number of families have... Even as this is a very strong reaction we are witnessing from the Kashmiri Hindus in the valley area. Stay with us, both Akansha and Suhail. Even as amid the continued targeted killings that we have witnessed in the past few days, a migrant worker was killed and another was injured in a targeted attack in central Kashmir's Budgam. This came hours after a bank manager from Rajasthan was murdered. Chilling CCTV footage of the attack shows a cowardly terrorist stole into the bank and whipped out his gun, loaded it and fired 2 rounds directly at Vijay. Now, while Islamist hate knows no bound, the killing wasn't unexpected. It was waiting to happen, and it is just one of the latest one on the uninterrupted genocide in Kashmir that seems to be on a rerun, with the Union Home Minister Amit Shah, who is all set to meet the National Security Advisor Ajit Doval to discuss the recent spate of targeted killings in Kashmir along with the Lieutenant Governor. पहले पोस्टिंग उनकी क्लर्क के रूप में हुई थी। 1 साल के बाद उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम देकर पीओ की पोस्ट की थी। वहाँ पीओ की पोस्ट तो जहाँ छोटे छोटे गांवों में बैंक है, वहाँ पीओ ही मैनेजर है। मैनेजर की पोस्ट वही कर रहे हैं। अभी ये चल रहा था आगे एग्ज़ाम, उनके पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, वो तैयारी कर रहा था आगे ब्रांच मैनेजर बन के फिर कोई और स्टेट में या कहीं भी आने की। हमारी कोशिश तो यही कि राजस्थान में कहीं आ जाए, पर ईश्वर की जो है इच्छा वही होगा। Meanwhile, the Hindu minority in Kashmir now says that enough is enough. Many pledge to leave the valley for the second time and never return again. Hear them and their voices in their darkest fears. भट्ट साहब की तहसील ऑफिस में आकर आइडेंटिफाई करके गोली मार दी जाती है। तो आप बताइए, एक तहसील ऑफिस सिक्योर नहीं है तो वो जो फॉर फ्लंग में हमारे लड़के काम कर रहे हैं वो कैसे सिक्योर होंगे? हम ट्रांसफर चाहते हैं, हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर चाहते हैं। हमारे माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। हम 15-15 साल से जॉब कर रहे हैं और हमने अच्छी जॉब की है। जब तक हमें कुछ यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई टेरर मतलब की टाइप का कुछ नहीं हुआ, उन लोगों ने हमें भरपूर साथ दिया। ट्रांसफर चाहते हैं, हमारी वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। हम ट्रांसफर चाहते हैं, वहाँ पे नहीं नौकरी करनी, हमको ट्रांसफर चाहिए, हमको बस ओनली ट्रांसफर। हम चाहते हैं उनकी सिक्योरिटी हो जाए और वो कश्मीर में ही रहे। हम नहीं चाहते वो यहाँ से निकले। वो हमारे भाई है और एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है। बार बार उनको खोखले वादे किए गए उनके साथ, और हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कोई स्टेप उठाए, उनको सिक्योर करे। आप देखिए, पिछले 1 महीने से 7 लोगों की, 7 सिविलियनों की जान चली गई। इस पे कोई ये नहीं हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, कहाँ इनको सेव कर रहे हैं वो। Well, ironically, those who have patronized terror in the last 3 decades are now coming out to put the entire blame at the doorstep of the centre. However, the BJP has hit back, saying they alone will repatriate Hindus in Kashmir. जो गलती 1989 में हमने की थी, वो गलती उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है।
आप सिर्फ पिक्चर बनाने में, प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का हमला पिक्चर प्रमोशन होगा। अब आप देख लो, खमियाजा भुगतना पड़ रहा था आपको। और ये हो गया कि रात में आपको जहां पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं वहां पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। निहत्थे बेकसूर लोगों को पाकिस्तानी आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। सेलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स, जिसमें कश्मीर के अंदर काम कर रहे हिंदुओं को और सिखों को तथा कश्मीर के अंदर जो देशभगत मुसलमान हैं उनको निशाना बनाने की एक साजिश हो रही है। Meanwhile, Times Now also in fact questioned the Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha on his arrival in the national capital for that all-crucial meeting with the Home Minister. But he had no answers to give on the Hindu killings. Watch the confrontation. The innocent lives being going in Kashmir, so I have to say. So another Hindu life was taken out today in Kashmir, sir. What do you have to say to that? So are you going to meet Amit Shah tomorrow? What's your plan, sir? Pradeep and Sohail continue to be live with us right now. Pradeep, अभी हमने एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखा जहां तक एलजी यहां दिल्ली में है, ऑल क्रूशल सिक्योरिटी मीटिंग होने वाली है, लेकिन जो हालात है वहां पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से, चाहे वो प्लेन से हो चाहे वो बाय रोड हो, कश्मीरी हिंदूज वैली को छोड़ रहे हैं। देखिए, जब से ये राहुल भट्ट की किलिंग हुई है तब से हमने देखा है कि लगातार कश्मीरी हिंदू एम्प्लॉयज जो हैं वादी कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे और कई बार उन्हें रोकने की भी कोशिश की है, जिसकी वजह से सरकार, जो एलजी सरकार है, उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। है कि जब हमारे संवाददाता ने कल उन्हें सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध दी। आज सबकी निगाहें इंपॉर्टेंट मीटिंग पर रहेंगी जो गृह मंत्रालय की होने वाली है, जिसकी जो अमित शाह चेयर करेंगे जिस मीटिंग को, उस मीटिंग में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे, आर्मी चीफ होंगे, एनएसए चीफ होंगे और बाकी जो एजेंसियों के जो है इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ होंगे वो भी उस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। इस मीटिंग में रणनीति डिसाइड की जाएगी किस तरीके से एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, दूसरा किस तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए। इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए है वो है हाइब्रिड टेररिस्ट, यानी कि पार्ट टाइम टेररिस्ट। ये पार्ट टाइम टेररिस्ट वो लोग हैं जो आते हैं, इन्हें टारगेट दिया जाता है, मारते हैं, उसके बाद बंदूक फेंकने के बाद आम निवासियों के साथ घुल मिल जाते हैं। यही एक वजह होती है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता और उनके लिए मुश्किल हो जाती है। और दूसरा ये कि 350 कंपनियां जो अमरनाथ यात्रा के लिए आई थी, 150 कंपनियों की ऑलरेडी तैनाती हो चुकी है, 200 जो कंपनियां उनको एडवांस में आप भेज जाएगा, जल्दी उनको भी तैनात कर दिए जाएंगे, यानी कि जून 15 तक उनकी तैनाती भी हो जाएगी। इसके अलावा एक एडवाइजरी इशू की गई है बैंक्स में, जहां भी कहीं माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग तैनात हैं, जो डिप्लॉयमेंट उनकी पोस्टिंग हुई है, वहां पे एक तो गार्ड होना चाहिए, दूसरा सर्विलेंस गैजेट्री होनी चाहिए, तीसरा इलाकाई देहाती बैंक को कहा गया है कि आप उनके परिवार Pradeep, going across to Sohail as well, who has been getting us those voices and ground reports. And Sohail, help our viewers understand what is the current situation like on the ground. We have seen once again the Kashmiri Hindu families planning to leave out. Many of them have already left, but it seems like there is a fear and anxiety and panic that is certainly escalating further. Well, in Kashmir, there are around 4,000 to 5,000 Kashmiri Pandit employees who are in fact recruited under Prime Minister's employment package. Some of them have been provided accommodations in those Pandit colonies in Budgam, Baramulla and Anantnag. Well, there are around a number of families who are living in rented accommodation. Then we have Hindu, in fact, those people who are working here and belong to Hindu community. Their strength is also 4,000 people. There we have around 2 lakh non-local laborers who are working in Kashmir. Now, most of the families who are living in fact, putting up in rented accommodations have left Kashmir Valley. Most of them have left Kashmir Valley because they fear after these target killings
But in those areas where Kashmiri Pandits have been allotted government accommodation, they are settled here. Government is trying to motivate them, trying to take up measures to ensure that they feel secure and safe here. We have seen security being intensified, in fact, enhanced around these colonies. Their transfers are being made. They are being placed at district headquarters, Tehsil headquarters. So the administration here trying to ensure that these Kashmiri Pandits feel safe. But yes, it is fact that some of the families who were putting up in rented accommodations in Srinagar city and elsewhere in South and North Kashmir, they have shifted. They have left Kashmir Valley and in fact moving towards Jammu. Some of them had already reached to Jammu. Absolutely, because we are getting those pictures also there of the arrival of those Hindu Kashmiri families in Jammu, the very same place that they were actually seeking a transfer in the first place that was to happen, and that the protests are still continuing. On the other hand, the LG is here in the national capital. Union Home Minister will be chairing an all-important security meeting. Pradeep Sohail, thanks very much for joining in. We head into a short break. You're watching the Morning News Hour.